In the case where we have to change the recovery point, then failover फिर वापस से start करना पड़ेगा क्या? नहीं, failover is already there, right? What do you mean by recovery point change करना? यहाँ पर are you saying this one? हाँ This हाँ one, yeah? ये You don't have to do the failover. Failover अभी तक हो रखा है ना, फिलहाल है failover, right? बस वो लेटेस्ट वाला अगर जो हाँ, सिलेक्ट करना है which is उसमें से। अच्छा now अच्छा। it's not possible. Why? I already committed. हम्म Before commit, this was हम्म, possible. Before अच्छा commit, you could change this recovery point. ओके। Okay, now look at this, guys. We have machine available here. Actual machine has been shut down. This is the machine. We can go ahead and check this. I'll see if I can put NSG here and if it is working. Otherwise, I don't want to go and uh, do the OS level troubleshooting, and that won't even help you guys. But still, we are going to have a look at that. By the way, do you see one difference, guys? Initially, uh, your machine had same name and hyphen test. This one doesn't have test. And if you try to create two machines with same name, you won't be able to do that. This is only possible because you did it through uh, this failover process. Is it clear? यस Okay, this is your machine. By the way, you can change this. One more thing. Good. One more thing is there. You can change your machine's size. Why would I do that? Let's say that I am running my application from East US. All my users are in East US. Okay, and my machine doesn't require that much of strength. Like it's okay, no bandwidth and nothing. It's not uh, spending some amount or resources on bandwidth, nothing. So I'm okay with this size. But when my machine goes to West US for some technical reason or business reason or maybe availability reason, this size is not there, so I can change it while creating or while setting up. I can mention this that whenever I do the DR, यहाँ पर ये size है, यहाँ पर दूसरा size होना चाहिए. Or let's take vice versa example. यहाँ पर I have taken a big example, a big size. ठीक है, 16 GB रैम, 32 GB का 32 GB रैम, मे बी 16 CPUs, 1 TB का हार्ड डिस्क, एवरीथिंग आई हैव टेकन. बट व्हाट एम आई सेइंग हियर दैट व्हेनेवर आई डू द डीआर होने के बाद मेरे हाफ ऑफ द कस्टमर वैसे ही डाउन हो जाएंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्विगी एंड लेट्स से दिस इज पुणे एंड दिस इज मुंबई. Okay, what am I saying here now? That my application is in Pune. Swiggy पुणे के लोगों के लिए चला रहा हूं मैं, तो मेरे होटल्स जो है वो भी तो पुणे से कनेक्टेड हो गए, राइट? सो नाउ व्हेन आई एम रनिंग इन पुणे, तो वहां पर 100 होटल्स कनेक्टेड है और 1000 कस्टमर्स रोज कनेक्ट कर रहे हैं. सो आई नीड अ बिगर साइज ऑफ मशीन. बट व्हेन आई गो टू मुंबई, ठीक है, डीआर में मैंने अपना एप्लीकेशन तो मुंबई में अप कर लिया, बट डिजास्टर कहां पर हुआ है? पुणे में, राइट? सो वो जो 100 होटल जिनके थ्रू मेरा बिजनेस चल रहा है, डू यू थिंक ऑल ऑफ देम विल हैव डीआर? नहीं। और जो लोग मेरे पुणे से ही ऑर्डर कर रहे थे, डू यू थिंक फ्लड के टाइम लोगों को ये होगा कि बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर कर? डू यू थिंक दैट विल वर्क द सेम इन सिमिलर मैनर? नहीं होगा, राइट? ड्रास्टिकली ट्रैफिक गिरेगा. मे बी देयर आर सम प्रीमियम कस्टमर्स, 5-10 और प्रीमियम रेस्टोरेंट जिन्होंने चला रखा है और वो उन्हीं को सर्व करने के लिए बैठे हैं. इन दैट मोमेंट ऑल्सो आई डू नॉट वांट टू लूज माय बिजनेस. ठीक है, इंसानियत वगैरह छोड़ दो, दैट इज सेकेंडरी. अगर प्रीमियम कस्टमर जो अच्छे खासा लखपति वगैरह है, बहुत फंड जमा कर रखा है, और प्रीमियम रेस्टोरेंट दे आर सेइंग कि ठीक है सर, हम आपको पहुंचा देंगे खाना, यू जस्ट ऑर्डर एंड पे अस, उस टाइम पे भी स्विगी बोल रहा है, देन व्हाई शुड आई लीव माय बिजनेस आल्सो, राइट? प्रीमियम का लाइक कोविड में हुआ था, गरीब मर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अमीरों के लिए हॉलीडे था. उस टाइम पे उस तरह के एप्लीकेशंस काम कर रहे थे. सो इन सिमिलर मैनर, बट व्हाट विल आई से हियर कि हियर डेफिनेटली आई एम नॉट गेटिंग 1000 कस्टमर्स. यहाँ पर जो डेली 1000 मिल रहे थे, आई एम गोइंग टू गेट हार्डली 50 कस्टमर्स और 50 रेस्टोरेंट ओपन हो गए. सो आई डू नॉट वांट ये 32 GB वाला सर्वर, 16 कोर का सर्वर, आई डू नॉट वांट दैट. यहाँ पर मेरा काम छोटा सा 5 GB और इसमें भी चल जाएगा. सो वाइल सेटिंग अप द डीआर, यू कैन मेंशन दिस कि जब भी डीआर होगा, नो मैटर यहाँ पर कौन सी मशीन है, आई वांट अ बेसिक मशीन हियर, दैट यू कैन डू. इज इट क्लियर गाइस? ओके, तो जब हम डिजास्टर रिकवरी का वर्चुअल Setup. मशीन जब क्रिएट करेंगे, No, no, सेटअप no. करेंगे, उस टाइम पे हम लोग, Yes. At the time of setup, you can select that. हाँ जी, वैसे तो आप बनने के बाद भी इसको रिसाइज कर सकते हो, राइट? बट देयर इज नो पॉइंट कि आप बार बार रिबूट करते बैठो, एप्लीकेशन अप ही नहीं हो रहा है, देन आपका आप यू आर हाँ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. अदरवाइज तो आप इसको बनने के बाद भी रिसाइज कर सकते हो, बट आप उसको पहले से ये कर दो तो बनेगा ही छोटे इसमें. वन मोर थिंग,
Now this actual machine of mine, it had, guys, can you hear me? Someone please confirm. Yeah, Sohail. Yes. Okay, हाँ हाँ great, Sohail. great. So actual machine of yours, it had premium SSD. Now I am saying यार वहां पर तो मुझको बड़ी एक या 2 दिन ही चलाना है अपना एप्लीकेशन, मैं कंटिन्यूस प्रीमियम SSD में क्यों रखूं? There I can select simple hard disk drive, वो भी मैं कर सकता हूँ. Technically it is possible. From business point of view, it is not advisable. काफी errors आते हैं. I'll tell you क्यों errors आते हैं पता है? Because properties are different. But technically it is possible. बहुत low level का application होगा, आप वो भी कर सकते हो. So this is how you are saving your money. DR में भी आप पैसा save कर रहे हो थोड़ा सा. But that is not feasible. Machine size it's okay. Disk को नहीं हम ज्यादा change करते हैं. Because if this is premium SSD, तो इसका IOPS जो है ना वो अलग होगा. Maximum throughput अलग होगा. IOPS और throughput से क्या होता है? डिस्क का रीड एंड राइट का कैपेसिटी, ये यहाँ से जो है मे बी 100 MB का डेटा 1 मिनट के अंदर और 1 सेकंड के अंदर ये देगा. बट वहां पर जो मेरी हार्ड डिस्क लगी है स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क, दैट हार्ड डिस्क विल नॉट बी एबल टू कैप्चर इन द सेम स्पीड. तो मिसमैच होगा, कभी क्रैश होगा, कुछ होगा, मे बी एट द टाइम ऑफ डिजास्टर यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर योर होल डेटा, एप्लीकेशन ठीक से नहीं चलेगा. बट टेक्निकली इट इज पॉसिबल. व्हेन यू गो यू कैन चेक व्हाइल सेटिंग इट अप. यू कैन यहाँ पर अगर आपका प्रीमियम एसएसडी है तो डीआर में आप जो है बेसिक हार्ड डिस्क दे सकते हो. बट टेक्निकली इट इज नॉट एडवाइजेबल, रीजन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू. साइज डेफिनेटली वो काफी बार आपको दिखता है कि यहाँ बड़ा साइज है, लोग वहां पर छोटा साइज ले लेते हैं. ओके, सो नाउ दिस मशीन इज अप एंड रनिंग गाइस. Let me see if I can quickly put NSG and let's see if it works. Can someone quickly guide me how to put NSG here? First, guide me to check whether NSG is there or not. Yes, guys, you're forgetting basics. Where do we apply NSG? So you On can go to subnet level. network settings. No. Yes, that is correct. Yeah, but where do we apply subnet? Sorry, where do we apply NSG? I already answered by the way. Subnet and NIC. So On either in subnet. this case, I can check on subnet or NIC, but I am on machine, so let's start with NIC. Network settings, Suzef said. Okay, after this, where do I go? Let the page come, don't worry. Do I have any NSG on this one? No, we can don't have. No, we don't have. Okay, now how do I create one? Click on add Add network network security group. security. Yes. I can create it from here, or I can go to main search window and create one from there and add it again, come back and add it here, right? I hope you understand that by now. Okay, fine, added. Should it work now? I think it should work, right? What do you think, guys? I'm just asking as a business owner. We'll have This is my You app. have to add a new rule. Okay. First thing to check, what do I need? To cross check things, what do I need? Can you guys check कि इस पे चल रहा है या नहीं चल रहा? Look at this public screen. IP. Yes, as of now, yes. At Public least. IP available नहीं है. So first let's put a public IP. I won't ask now how to add a public IP. You guys already answered that. So let me add a public IP. You guys will also have the IP address and we can cross check that then immediately. But again, just a reminder, this is not what you will do. That's not required. Just giving some extra name, maybe if there is some name already there. The first time error we got because the test public IP was already there. It is in deployment. Once it is created, we'll have a public IP on the machine. So let's go back to our NSG thing. Right? Correct. Okay, fine. I don't want to go here from here. Okay, now I've got the public IP. Okay. Let's check if it is working. Do you think it should work, guys?
I hope I assigned it to the correct VM. Here it is. Sharing the public IP with you. What do you think? Will it work or it won't work? Website. नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में अभी तक हम लोग ने अलाउ नहीं किया है ना Yes. सोहेल, वहां पे डिनाई है ऑलरेडी, तो वहां पे जाके पब्लिक आईपी तो लगाया हमने, लेकिन एनएसजी में जाके उसको अलाउ करना पड़ेगा ना, तभी वो चलेगा. Right, correct. So let's go to NSG. Which rule do I check? Outbound, inbound? नीचे जो इनबाउंड रूल है नीचे थोड़ा सा ट्रैक करो, वहां Okay. पे जहां पे डिनाई दिख रहा है ना, वहां पे आप उसको अलाउ करो, तब जाके फिर मैं मतलब हम वो वेबसाइट को चेक कर पाएंगे, मतलब Completely wrong. ये कर पाएंगे. Completely We wrong. have to Correct. add a new rule. अच्छा. Can we amend this अच्छा, rule? न्यू. ओके ओके. हाँ, न्यू रूल. सॉरी. No. Yes, guys, do not forget basics, please. It was one of the basic questions that can you amend the rule? We can override the rule, right? Okay, With how do low I priority number. create a new rule then? Yes, guys, how do I create a new rule? Please click on create Inbound, code rule. outbound? Inbound. Inbound. Simple. Inbound. Okay. We have to be very specific with this, but I am putting all of them. Okay, I am allowing any. Otherwise, we'll have to do HTTP. Or if you want, we can. Okay, let's go HTTPS. with HTTP. Or let's allow all of them. All HTTP port are fine. What we have to do, allow. Okay. What is the significance of this priority? क्या मतलब हुआ priority का? It should be lower. Lower than what? Smaller number gets more priority. Smaller from which? I mean, compared to what? Smaller किससे छोटा? Between 100 to 4096. Sorry, no, that is fine. 100 से between 100 to 409. Less It's than okay. it should be less than 65,000. Why 65,000? But already he said, right? Sufyan said it can be between 100 to 4096. So definitely it is beyond 65, below 6500. Yes, But why 409. 6500? What is the logic behind it? What you are trying to say that priority number should be lesser. Lesser the number, higher the priority. But compared to what? किससे lesser रखूं मैं? The rule, like if you are applying on deny, allow, inbound, Deny all Yes, inbound. जिस भी रूल से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उस रूल से छोटा चाहिए. तो इस केस में तो बाय डिफॉल्ट छोटा ही होगा. इवन इफ आई टेक द मैक्सिमम नंबर जो मेरे पास है उसको भी ले लूं तो इस रूल से छोटा ही होने वाला है, राइट? बट इफ यू हैड सेम रूल, इस तरह से कोई दो रूल होते जो आपके एडिट किए हुए हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो छोटा हो किससे, जिस रूल से वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उससे छोटा होना चाहिए. गॉट इट? Yes. Okay. Now I have applied it. It takes some time, guys. NSG है वो, but still, let's give it a try. Let me know if it is working. It is showing. So now do you guys understand that how quickly you can bring your application up and running? But इस केस में एनएसजी आप ऑलरेडी तैयार रखोगे, राइट? एनएसजी आप ऑलरेडी रेडी रखोगे, और इसमें अगर आपका ये होगा लोड बैलेंसर वगैरह होगा तो भी आप ये रखोगे, रेडी रखोगे. Is it clear, guys? Yeah, sorry. Okay, few more things are there. Let me quickly show it to you. Okay, now once this is done, what do you think the status of disaster recovery here? Let's not waste time. We have less time. I have to cover one more thing, subtopic in this one. I mean, not topic, of feature, and very good and very important feature. So here I can simply come and I can reprotect this. अब reprotect में क्या होगा? West US आपका ये बन जाएगा, बेसिक रीजन बन जाएगा, एंड ईस्ट यूएस आपका, और whichever you select वो आपका DR रीजन बन जाएगा. If you simply click OK, now look at this. What will happen? West US आपका प्राइमरी रीजन बन जाएगा, ईस्ट यूएस आपका सेकेंडरी रीजन बन जाएगा. बट डू यू वांट दैट? आपका ज्यादा बिजनेस वगैरह कहां पर है?
ज्यादा बिजनेस तो ईस्ट में है ईस्ट यूएस में क्योंकि अभी आपको वो वहां चाहिए, पे सो व्हाट डीआर विल है, यू डू? इसकी वजह से। हाँ, हाँ। जब एवरीथिंग वंस एवरीथिंग इज सेटल यू विल गो टू दैट मशीन, और वहां इसको आप डिसेबल कर दो रेप्लिकेशन को, उस मशीन को अप करो, और फिर से जीरो से आप जो है पूरा का पूरा ये कर दोगे, रेप्लिकेशन को अप करोगे। इन बोथ केसेस वो जीरो से ही हो रहा है, बस द मोमेंट यू क्लिक ऑन रीप्रोटेक्ट, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। आप पूरा डिसेबल करके रेप्लिकेशन को डिसेबल करके जीरो से करो, देन यू विल हैव चांस कि ईस्ट यूएस वाली मशीन को अप करो, उसी को पूरा अप टू डेट करो, एंड देन वहां से आप लोग यहाँ पर ये करो। इज इट क्लियर? ये तो इस सिचुएशन में होगा ना सोहेल, जब डीआर सही हो जाएगा हाँ, उस पर्टिकुलर रीजन में, ऑब्वियसली तो फिर आफ्टर, हम लोग ये जाके मतलब करेंगे स्टेप। obviously उसमें भी बहुत सारे steps हो गए, it's not that easy because after 5 days once your machine is up in East US, कुछ उन 5 days में आपके एप्लीकेशन में बहुत कुछ बदल चुका है, यहाँ पर डेटा वगैरह बहुत कुछ बदल चुका है, तो you'll have to do a manual synchronization वगैरह, it's a long process, you don't have to worry, you just need to know the concepts कि एक बार डीआर होने के बाद क्या हम्म। होता है। वैसे भी डीआर you can simply say I've never participated in any DRY. Why? I'm a part of implementation team, so normally production issues then don't come to us. Test failover, you should know everything. Is it clear to everyone, guys? करेक्ट। Okay. Now let me show you one more thing. Now we're talking about DR and everything कि ये कर दोगे तो आप DR होगा, वो कर दोगे DR होगा, DR disaster recovery, it's completely highly available. Now tell me one thing, if I have a machine like this or an application like this, let me open the correct one. Okay, this one. And if I have replicated this machine to here, this is my whole application. Face app is my application. I have replicated this machine, only one particular machine. Is my application highly available? No, not at all. Why not? It is a 3-tier application. No? All the machines backup should be in replication. Good. Now, if I've replicated these 3 machines, look at very carefully, guys, what I have on my actual environment and what am I replicating. I have 3 machines here, I have 4 machines here, maybe 442 or whatever it is. Is this highly available application? Still no. Let's imagine ये load balancer वगैरह No. मैं सब कुछ वहां पर लगा दूंगा, ठीक है, load balancer वगैरह वो सब मैं लगा दूंगा. Let's say I'm replicating load balancers also. Still not? The application is running, but it is not highly available. Why not? Only one Because VM your is application is replicable. hosted only on one machine. No, वो वहां पर जाने के बाद नहीं रहेगी, that is fine. As of now, look at, आपने DR कर दिया ना, उसके बाद वैसे ही कोई भी मशीन आपकी हाईली अवेलेबल नहीं है, guys. Understand one thing, right? उसके बाद वैसे ही कोई मशीन हाईली अवेलेबल नहीं है. We have to reprotect again, वो करना ही पड़ेगा. As of now, ये is it highly available or not? अगर मेरा एक रीजन डाउन हो जाता है, will I have my application up and running or not? चाहे वो एक No. पे भी क्यों ना हो. Why not? It will work, guys, and it is highly available. Though Correct. once the replicated is done, once the replication or once DR is completed, तब वो highly available नहीं कहलाएगा. You'll have to reinitiate it. But as of now, it is highly available. Why? क्योंकि अगर ये region down हो जाता है ना, ठीक है, if this region is down, still your your application will run, because आपने front end से भी एक server ले लिया, back end से भी एक ले लिया और database से भी ले लिया. And still I understand what you guys are saying. आप लोगों को उतना ही ज्यादा अगर ये है issue है, you can take 2 also. It's okay. You take 1 or you take 2. But the question here was कि if you take all 4 of these और back end से एक भी ना लो, तब highly available नहीं होगा. Getting it, guys? Backends, Yes, Solva, yes. फ्रंट एंड एंड डेटाबेस, इनको मिला के आपकी मशीन्स और सब कुछ इस चलता है. आप इस चारों को ले लो और ये नहीं करो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन हियर इज, आपने ये सब तो कर लिया, अब आपका लेट्स से ये रीजन पूरा डाउन हो गया. हाउ मेनी मशीन्स यू हैव? 4, 8, 10. किस मशीन से फेल ओवर शुरू करोगे आप? फेल ओवर हमने देखा, राइट? यू हैव टू गो टू डीआर, फेल ओवर पे क्लिक करना पड़ता है.
किस मशीन से you will start. And here you just see 4 machines. Let's say it's a crucial application, very crucial application. You have 15 machines in front end, 15 machines in back end, and 10 machines in database. 15, 15, 10, 30, 40 machines you have. 40 machines पे आपको fail over करना है. किससे शुरू करोगे? First thing. किस machine से और किस segment से? First tell me, are you guys going to start with front end, back end or database? First tell me that. Machine पे तो हम बाद में आते हैं. Database. Database. Why not front end? Front end will come into picture afterwards. Why? You're repeating the answer. Answer is correct, though. Question is why? As Why it not is, front end? connecting to the users as it Yes, we are perfect. not Fine. Got your answer. Statements and sentences you guys can create. I'm doing it a little bit fast because I want to cover it in the same recording. Answer is correct. फ्रंट एंड चालू हो जाएगा तो जैसे आप लोगों को वेबसाइट दिख रही है ना वो दिखेगा, बट नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन कनेक्ट और कॉन्टैक्ट, जो एक्चुअली बैकएंड में जाना चाहिए था डेटाबेस में, वो आप ही नहीं है. तो अननेसेसरी यूजर्स का कोई डेटा लॉस होने का चांस है, बिजनेस लॉस होने का चांस है, एंड देयर आर that it's not a proper way. So you'll always get the database up and running first. क्योंकि सिर्फ डेटाबेस रनिंग होने पे कोई डायरेक्ट आपके डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? नो वन इज कनेक्टिंग टू योर डेटाबेस. आपकी एप्लीकेशन फुल्ली अप एंड रनिंग नहीं है. जब तक ये तीनों सेगमेंट अप नहीं होते, आपकी एप्लीकेशन फुल्ली अप नहीं है. और जब तक आप नहीं चाहते हो कि आपके क्लाइंट्स को ये हो, सो यू विल अपग्रेड और यू विल ब्रिंग अप द डेटाबेस, देन यू विल ब्रिंग अप द बैकएंड. डायरेक्टली कोई बैकएंड से भी यहाँ कनेक्ट नहीं कर रहा जब तक फ्रंट एंड से कोई ट्रिगर नहीं आता. वंस दीज टू आर स्टेबल, then you will bring up the front end. By the way, all these connectivity ये सब आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता है. ये सब कुछ जो है प्रोग्रामेटिक वे में एप्लीकेशन में ऑलरेडी होता है. मशीन विल नो, क्योंकि आईपी आपके सेम होने वाले हैं. डोंट फॉरगेट दैट. ये आईपी जो वहां पर है, सेम आईपी यहाँ पर रेप्लिकेट होने वाला है. सो दिस मशीन नोज कि एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट आते ही वेयर इट हैज टू गो. दिस मशीन नोज दैट इट हैज टू गो टू दिस पब्लिक आई, दिस लोड बैलेंसर. हाँ, ये लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी यू हैव टू डू मैन्युअली. ये आप ऑलरेडी स्क्रिप्ट में कर सकते हो. दैट यू कैन रन अ स्क्रिप्ट कि यहाँ पर 3 ये बन जाए, लोड बैलेंसर बन जाए, एंड यू सिंपली कनेक्ट देम. उतना टाइम तो लगता ही है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. इज इट क्लियर गाइस टू एवरीवन? Yes. ओके, नाउ यू डिसाइडेड डेटाबेस करना है. फाइन. डेटाबेस में 10 सर्वर्स है. कौन सा सर्वर से स्टार्ट करोगे? चलो, आपने डेटाबेस कर लिया, बैकएंड भी कर लिया, फ्रंट एंड में 15 सर्वर है. किस सर्वर से स्टार्ट करोगे? सिंपल आंसर, किसी से भी आप कर लो, दैट्स फाइन. जब तक पूरे के पूरे 15 मशीन अपनी होते हैं, आप लोड बैलेंसर के आईपी को शेयर ही मत करो. डू नॉट क्लेम इट. ईमेल करके मत बताओ कि आपका एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, और मीनवाइल इस आईपी को आप असाइन ही मत करो यहाँ तक, राइट? सिंपल चीज है, इस आईपी को असाइन करो ही मत आप. तो जो भी इसको एक्सेस कर रहा है उसके लिए डाउन ही होगा. जब सारे मशीन अप एंड रनिंग हो जाए तब इस आईपी को यहाँ पर असाइन कर दो. देन योर लोड बैलेंसर इज वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग. इससे भी एक एडवांस होता है डीएनएस. डीएनएस में क्या होता है, वो आईपी वही रहेगा, यहाँ पर राउट कर देता है. वी आर नॉट डूइंग दैट नाउ. I'm just showing it to you, the options क्या क्या होते हैं. But apart from this, there is one very good option which we are going to learn. इतना सारा discussion हमने किया to check one option which is there in disaster recovery. I hope I get it now because यहाँ पर अभी कोई replication है या नहीं पता नहीं. Let's see. On this machine we started replication, right? Okay, let's start the replication. Okay, look at this, guys. While doing this replication setting, you can select all of these details कि किस तरह का replication आपको चाहिए, ये सब जो है, and you can start replication. And after that also, if you have to change something, I'll show it to you कहाँ से करना है. Look at this. यहाँ पर your actual disk is this. You want premium, you want standard HDD, whatever you want, you can select it. You can update the settings from here, extension settings, everything. I didn't do it from here, but you can do it from here. And we can do it once this is done. Properties से भी कर सकते हैं. So let's say once we have any recovery service vault, once it is here, like we had policies in backup, right? Backup policy, I hope याद है आप लोगों को कि कितने टाइम में बैकअप होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. Do you guys remember backup Yes. policies?
Similarly, we have recovery plans. It is called plan. In recovery plan, you can plan it accordingly. Let's name it as backend. Okay, you name it as backend servers. You select your source and then you select your machines here. We never deal with classic manager. Sorry, classic. We always deal with a resource manager. Backend, West US to East US. We are going. And here, guys, you will get your machines. जो machines replicated and now we do not have any machines. Otherwise, here you will get your machines. यहाँ पर जैसे ही आप select करते हो, let one of the machines get replicated, then I'll show it to you. तो यहाँ पर वो सारे machines आपको मिलेंगे. For example, you will see all these machines and then you can select backend में जो है आप select कर सकते हो ये सारे machines backend के. You can create one more plan. फ्रंट एंड और फ्रंट एंड में सारे फ्रंट एंड के मशीन्स आप सेलेक्ट कर लो. देन यू कैन सेलेक्ट डेटाबेस में सारे डेटाबेस के मशीन्स आप सेलेक्ट करो. एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट द प्लान्स हियर. और जो ऊपर होगा, जिसको आपने सबसे ऊपर होगा रखा होगा, वो पहले ऑन होगा. सो फॉर एग्जांपल एक मशीन बनने दीजिए, देन आई विल शो इट टू यू. वैसे भी वो पूरा नहीं बता पाऊंगा मैं, बिकॉज वी हैव ओनली वन मशीन. यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम 3 मशीन चाहिए मुझको रेप्लिकेशन में. सो आई विल बी एबल टू शो इट टू यू. यू कम हियर, यू सेलेक्ट द रिकवरी प्लान. आप इस तरह से रिकवरी प्लान बनाते हो. यहाँ पे जैसे ही आप वेस्ट यूज करते हो तो जो भी मशीन रेप्लिकेट हो रहे हैं ना वो यहाँ पर दिखते हैं. एज ऑफ नाउ आई डू नॉट हैव एनी मशीन which has replicated completely. Otherwise I'll select those machines. Look at this, it will give me error. Select the machines. But यहाँ पर कोई मशीन बता नहीं रहा है because there is no machine. Otherwise यहाँ पर आपको machines दिखेंगे. यहाँ पर मैं अपने सारे backend के machines को ये कर लूंगा. What I'll do, I will select all the database machines here if I'm doing database. When I'll create one plan, done. So first database हो गया यहाँ पर. Then ठीक है, but that is created. I'll again come and create recovery plan number 2. What will I do? I'll select all machines which are in backend. I'll create recovery plan number 3 named front end. I'll select all the front end machines. And now this is first, this is second, this is third. Now when I do the failover, it will turn on all the machines in this manner. You don't have to do that manually. आपको मैन्युअली जाके ये 10 मशीन को नहीं करना है, आपको मैन्युअली जाके 15 मशीन को नहीं करना है, और ये भी आपको याद से नहीं रखना है. आई मीन आई आस्क्ड यू एंड आई टोल्ड यू कि इस तरह से कर सकते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन इट यू, बट यू विल नेवर डू दैट मैन्युअली. कभी नहीं होता मैन्युअली. ये रिकवरी प्लान हमेशा वहां पर होगा. एंड अकॉर्डिंग टू रिकवरी प्लान ये सब अपने आप अप हो जाएंगे. डेटाबेस पहले सारे मशीन्स अप हो गए, then backend machines up हो गए, and then front end machine up हो गए. And you as a person, when you do that manually, even let's say 4 resources are doing manually, काफी रिस्क होता है, काफी चांस होता है, you can miss something, कभी कोई गलत कर दो. But once you create a recovery plan, then it's there, it's an automation for you. आपको बस जाना है and you have to click failover. Like in that one failover में एक मशीन अप हुई थी, इस failover में पूरा का पूरा recovery plan आपका ट्रिगर हो जाएगा और सारी मशीन्स आपकी साथ में अप हो जाएगी. Is it clear guys to everyone? Yes. Yes, sir. So this is where guys we are done with our disaster recovery, backup and everything. We are just left with 2 topics. One is migration, most crucial and very important. उसके बाद छोटा सा एक है monitoring. Last time के बैच में आई थिंक हमने मॉनिटरिंग स्किप भी कर दिया था, बिकॉज यहाँ तक जब आप पढ़ते हो तो मॉनिटरिंग एक यूट्यूब के वीडियो में आप खुद ही सीख लेते हो. इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्टिल विल कवर मॉनिटरिंग एंड इट्स नॉट अ बिग टास्क. उसको हम आराम से कर लेंगे. मेजर टास्क इज migration, which we are going to start tomorrow. I do not want to start today. I want to dedicate this one only for DSR. So do you guys have any questions on backup, on DSR, anything? Let me know. Tomorrow we are going to start our migration theory part first, a detailed one it has, and then we'll start our next week we'll start our practical of migration, and I think that will be our last class. So tomorrow theory part will be covered tomorrow, because we have 3 sessions, more than enough. 16 and 17 will have our migrations practical, and that will be our last class. Monitoring will cover somewhere, don't worry. Okay, so do you guys have any questions on DR, on anything, whatever we have been doing till now? Don't we are not finishing our classes. We will have interviews, mock sessions, resume
building sessions, portal, how to prepare your resume, everything we will have. But our technical and our portion, according to whatever I have shared with you, that will be done next week. Tomorrow we'll do the migration theory part. Yes, guys, any questions? Whatever we discussed till here? Backup, replication, backup policies, recovery plan, backup infrastructure. This is nothing. Backup infrastructure when I say, यहाँ पर आपको वो machines दिखती है जो आपके on prem से backup हो रहा है या फिर कहीं AWS से या GCP से. If those are backing up from there, वहां से ये दिखता है आपको. Backup, actual backup में यहाँ पर आपकी Azure की machines दिखती है. Site recovery, it is possible out of Azure से भी हम कर सकते हैं. That is how we do migration. Migration में यही आपको देखने मिलने वाला है. बस the thing is that, look at this. If you guys do not have any questions, I'll just show it to you. We're not doing any migration now, don't worry. I don't want to mix the topics, but what I'm trying to show here is migration में आप लोगों को एक tool दे दिया यहाँ पर. Okay. And this tool, background में ये tool जो है ना आपका, वो यही करने वाला है. ASR को ही यूज करेगा. Without ASR, it's not possible. प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर. I'll explain it to you. जब हम migration करते हैं, I'll explain it to you. And migration, it's not only server. Migration database का भी होता है, web app का भी होता है, बहुत सारी चीजों का होता है. I'll cover the theory part of this. I'll cover the theory part of this, theory part of this one also. By the way, database migration हमने देखा भी है. When we discussed storage, I shown you this one. If I go to any storage account, look at this, data migration. So this is your data migration. From where are you bringing your data? And transfer scenario क्या है? कहाँ से कहाँ पर जा रहा है? Are you moving it to new subscription, resource type storage account, और इससे ज़्यादा let's say on-prem or maybe other cloud, local on-prem का data आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है? Azure blobs में जा रहा है. Okay, is it, what is the size of data? 50 GB. Approximate network bandwidth, आपके data center की bandwidth कितनी है? Mostly 10 Gbps होता है, 10 Gbps. Is it one time thing you're doing or repetitively? So you will select these options and you will get automatically आपको strategy मिल जाती है. You click on this one, easy copy. जो भी आपको method select करना है, you will get the complete details के किस तरह से आपको करना है. Okay, look at this complete details. Still I'll be covering this. Don't worry. Or migration, guys, whenever we say or interviewer says migration, he always means, it is implied that he meant from on-prem to Azure. Otherwise आप एक machine ये करते हो ना, if I use Azure resource mover, और एक machine को if I move it from one subscription, forget a subscription, resource group. If I move it from one resource group to another resource group, I don't have any machine in this resource group. So even if I move one machine from one resource group to another resource group, that will still be called migration. वो भी migration ही होता है. आप एक data यहाँ से वहाँ move कर रहे हो, वो भी migration ही है आपका. Okay, if I want to move, look at this. This is what I can do. ये भी, this is also migration. But when an interviewer is saying, have you worked on migration? Can you explain migration? Definitely this is not what he is asking. ये 4 click का काम है, आप ऐसे ही कर लोगे. Next करना है और वो हो जाएगा move. That's not what he is asking. He or she will not be specific that I am asking about on-prem to cloud migration, but it is implied when they are saying migration, it is on-prem to cloud. अब on-prem में physical server हो सकता है, on-prem में Hyper-V का server हो सकता है, on-prem में vCenter का server हो सकता है. Everything is fine. Whichever you are comfortable, आप उसको present कर दो. We are going to practice on Hyper-V. You can say it on vCenter also, same steps हो गए. You can say it on physical server also, same steps हो गए. I hope you guys remember what is Hyper-V. Session 1 में मैंने आप लोगों को बताया था, right? VMware and Hyper-V क्या होता है, right? VMware, Yes. So like VMware, VMware is a company. VMware का hypervisor है vSphere, जिससे आप पूरा इस सर्वर को ये करते हो, वर्चुअलाइज करते हो. उसी तरह से Microsoft का एक है hypervisor which is called Hyper-V. So you install it on a hardware, उससे आपके काफी सारे servers virtual बन जाते हैं. So we are going to learn to migrate servers which are hosted on Hyper-V. I will create my own machine in AWS.
जहाँ पे I'm not bringing servers directly from AWS. Okay, don't get it incorrectly. I will create one server, one big server, huge server on AWS. उस सर्वर पे मैं Hyper-V इंस्टॉल करूंगा, and there I will have two servers, one Linux and one Windows. And those servers from Hyper-V, I'll show it to you how we migrate from Hyper-V to Azure. Same steps you can replicate to vCenter or on-prem, but Hyper-V भी आप बोल सकते हो. That we are going to do next week. Tomorrow we are going to do theory part of migration. Practical से ज़्यादा theory भी बहुत ज़्यादा important है in your interview question also and answer, and to understand the logic also. तो ये सब हम लोग कल करेंगे. That if they ask you how many migration have you worked on, कितने आपको बोलने हैं, उसका एक छोटा सा formula है, not literally a formula. The basic concept ये मैंने अपने experience के साथ ये किया, that 10 plus migration, this was over a period of 5 years. किसी ने अगर 5 साल काम किया तो वो 10 माइग्रेशन का क्लेम करता है. तो नाउ यू कैन इमेजिन, कोई अगर 8 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, आप 12 माइग्रेशन बोल देना. कोई 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, आप जो है 3 माइग्रेशन बोल देना. इट्स अप टू यू. उसमें एक असेसमेंट भी होता है. असेसमेंट अलग होता है, माइग्रेशन अलग होता है. कई बार ऐसा होता है आपने 10 असेसमेंट किए, लेकिन बेस्ड ऑन दैट असेसमेंट सिर्फ 5 माइग्रेशन किए, बचे 5 माइग्रेशन किसी और ने कर दिए. सो अगेन 20 प्लस असेसमेंट over the 5 years of experience and 10 plus migration over the 5 plus experience. ये आप अपने अपने इसके हिसाब से इसको modify कर लेना. Right? We'll check that, don't worry. इस सब को मैं डिटेल में कल हम लोग, tomorrow we are going to do the theory part of migration. Next session from next weekend we'll start practical and we'll finish on एक Saturday Sunday 6 session में मिलके हमारा सब कुछ हो जाएगा. Right? Do you guys want me to assign homework to you on backup and recovery, backup and DR, or will you guys do it yourself? नहीं, आप असाइन कर दीजिए तो पता चलेगा कैसे करना है, मतलब आइडिया चाहिए. Okay. Yes, guys. Any other questions do you have? सुन, अभी आप जैसे बोल रहे हो कि हम लोग रेज्यूम बिल्डिंग का एक करेंगे सेशन, तो वो एक एक एसोसिएट के साथ में करेंगे, अलग अलग टाइम देके, क्या कैसा होगा, मतलब नहीं, we'll मेरे को do that समझ में together. नहीं आ रहा. We'll do that together. I'll explain it in a manner कि वो सब अपने अपने हिसाब से उसको imply कर पाएंगे. Don't worry. We'll do that together. अच्छा, ठीक है. Okay, guys. So if no further questions, I'll stop the session. See you guys tomorrow. Migration theory part we'll do today. When you have some time, try to complete. And this is the last subscription we are having, guys. No one will be able to create. I mean, no one will be creating it. And even if they create, I am not sure if they will share the access with you or not. So utilize it as much as you can. Right? Use it. Do the practical backup, recovery, DR, everything. Once you are done, delete the resources. Let others also utilize it. See you guys tomorrow, same time. Thank you. Thank you.